बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह आप सबको पता है कि सीकॉस यूनिवर्सिटी में क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट नहीं हो रही कोरोना वायरस की वजह से। सो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि हम टीचर्स स्टूडेंट को कोर्सेज ऑनलाइन करवाएंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो कोर्स मुझे इस सेमेस्टर में असाइन किया गया है दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। बिफोर forwarding with this course, I would like to give you an overview of the last 3 weeks, the material that we have covered inside the classes. So here is a brief overview. आज हम बात करेंगे कि क्लाउड किसे कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, and I would share a simple topology about cloud computing. Then we will see some major cloud providers, and also we will talk about some categories of the clouds. Cloud computing को हम different categories में divide कर सकते हैं, so वो categories कौन कौन सी हैं, and then a proper definition of cloud, innovations which leads to the development of the cloud, उस पे हम बात करेंगे, some delivery models of the cloud computing, and obviously आप लोगों ने assignment में भी देखा होगा कि cloud computing को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अपने advantages हैं, disadvantages हैं, and there are few characteristics of the cloud computing, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम जो हमारे पास आजकल के जो क्लाउड्स अवेलेबल हैं उसके मेन फीचर्स पे हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा सेंटर किसे कहते हैं, या व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा, एंड व्हाट आर द प्रोग्रामिंग टूल्स दैट आर करंटली यूज्ड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग पैराडाइम। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज़ क्लाउड? कोर्स के स्टार्ट में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन किया था। जब आपके जहन में क्लाउड का वर्ड आता है, सो डिफरेंट थिंग्स कम टू आवर माइंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई कहेगा कि जो आपके पास क्लाउड है इट इज़ लाइक अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज़ क्लस्टर? यू नो वेरी वेल। इस पे हमने बात की थी कि cluster is basically a collection of different computers, powerful computers, जिसको हम interconnect करते हैं आपस में in order to achieve a common task, a common objective। ये वो collectively काम करते हैं किसी problem को solve करने के लिए। So some people will reply कि cloud is just a cluster of computers. Some would say no, it is not a cluster, it is actually a supercomputer. Now what is supercomputer? You know there are different types of computer, and the most powerful computer available today is a supercomputer. तो जो बड़ी organizations हैं जो सुपर कंप्यूटर्स ख़रीद सकती हैं वो सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन सुपर कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, सो ऑब्वियसली दे विल नीड देयर ओन सोल्यूशन, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर। वो अपना क्लस्टर खुद डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो दीज आर टू व्यूज़ अबाउट क्लाउड। सम वुड से क्लाउड इज़ अ क्लस्टर, अदर वुड से इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर। अनदर ग्रुप ऑफ पीपल वुड रिप्लाई कि क्लाउड हमारे पास एक डेटा स्टोर है, मीन अ बिग स्टोर लाइक अ वेयर हाउस, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड दिस इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा कम फ्रॉम। अदर वुड रिप्लाई कि वेल अ क्लाउड इज़
लाइक अ सुपरमैन। अब सुपरमैन का आइडिया आपको पता होगा, जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो स्टोरेज से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, या जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, द क्लाउड इज़ देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, some of you might be thinking कि all of these are true. Cloud is a cluster, cloud is a super computer, is like a data store and is like a superman. Wow, it can do anything for you. While others would say no, इनमें से कोई भी डेफिनेशन क्लाउड को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, सो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू एग्री ऑन अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ क्लाउड। दो चीज़ें हैं जो कि क्लाउड को रिप्रेजेंट करती है, स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग। लॉट्स ऑफ स्टोरेज एंड ह्यूज प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग पावर which will make a cloud. Now what is a cloud? Basically जो cloud है, there is a collection of different pieces. A normal cloud, a single cloud जिसको हम बाज़ों का data center भी कहते हैं, that is a collection of computers जिनको हमने organize किया होता है into different racks, और उन computers को connect करने के लिए या उन racks को connect करने के लिए we have different switches, top level switches, and also these computers or these racks are organized in a logical form which is called a network topology. Mostly जो cloud के लिए topology हम use करते हैं, that is a hierarchical tree like topology or tree based topology, and also इस group of entities में storage भी है, because we are dealing with a huge amount of data inside the cloud. तो उनको store करने के लिए we need different storage devices, different technologies for storage are available. And then we need front end जहाँ पे users या clients जो हैं queries को, jobs को submit कर सकें, and जहाँ पे server response देने के बाद जो output है वो उसको display कर सकें in front of the clients customers. और भी नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, द लिस्ट गोज एंड गोज एंड गोज। ओके, क्लाउड आपके पास सिंगल भी हो सकता है, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड है, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस or distributed computing, in such a case, in such a scenario, you do not have a single site, instead you have multiple sites which are interconnected with one another, so that is called a distributed cloud computing. Here you can see a graphical representation of a tree or hierarchical topology. You can see the racks, the servers जिनको हमने organize किया है into racks, and you see the top level switches, और switches आपस में connected हैं with the core, with the help of the core switches. So this is like a three level tree. At the top level we have the core switches, and then we have the rack level switches, and at the bottom we are dealing with the servers. और इस topology को आप मज़ीद extend भी कर सकते हैं to other levels depending on. Now let us talk about some famous cloud providers. यानी अगर आपको cloud की कोई सर्विस चाहिए तो आप वो सर्विस किन से ले सकते हैं। At the top of the list we have Amazon, जिसको हम कहते हैं AWS. Amazon आपको different services provide करता है. Some of the famous services जो कि आपको Amazon provide करता है, they are EC2, S3 and EBS.
जो फर्स्ट सर्विस है उसका फोकस जो है वो कंप्यूटिंग पे है, प्रोसेसिंग पे है। सेकंड S3 उसका फोकस जो है वो स्टोरेज पे है। अगर आपको स्टोरेज से रिलेटेड सर्विस चाहिए अमेज़ोन की, सो S3 इज़ द ऑप्शन। एंड देन वी हैव अ कॉम्बिनेशन विच इज़ कॉल्ड EBS, block storage service. In the list on the second number we have Microsoft Azure और Azure, जिस तरह आप इसको प्रोनाउंस करें। Microsoft Azure के अलावा we have Google, जिससे भी आप क्लाउड की सर्विस ले सकते हैं, and the famous one is Compute Engine. And we also have Cloudera, RightScale, Salesforce which is very common, very famous as well, and the list goes and goes. We also have many other cloud providers which are not mentioned here in the list. Clouds की categorization, जो क्लाउड्स अवेलेबल हैं उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन वे इज़ के जो क्लाउड हैं वो या तो पब्लिक होगा या वो प्राइवेट क्लाउड होगा। प्राइवेट क्लाउड्स की अगर हम बात करें, सो दे आर एक्सेसिबल ओनली टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी, जहाँ पे वो क्लाउड बिलोंग्स करता है। आप इसको अपना डेटा सेंटर भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीकॉस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एक डेटा सेंटर बना लें और आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि सिर्फ सीकॉस के एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट इस डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, सो दैट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट क्लाउड इज़ नॉट दैट मच कॉमन। इंस्टेड वी प्रेफर टू यूज़ पब्लिक क्लाउड्स। दोनों के प्लस और नेगेटिव हैं। पब्लिक क्लाउड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर, और उनके अपने पेमेंट के मॉडल्स होते हैं जो कि भी आगे जाके हम देखेंगे भी। इन ऑर्डर टू अवेल अ सर्विस यू हैव टू पे टू द प्रोवाइडर अ फी फॉर दैट सर्विस। सम ऑफ एग्जांपल्स आर हियर, अमेज़ॉन है या गूगल ऐप इंजन वगैरह है, उनकी सर्विसेज पब्लिक के लिए अवेलेबल होती हैं। कुछ some of them are freely available, for example Gmail or Google Docs etc. They are freely available to anyone, while the other you need to pay. Okay, why we use cloud? Two reasons. There are plenty of other reasons as well, but two of the most obvious reason for using a cloud are that you will save your time and you will save your money. और इस पर हमने काफ़ी बात की थी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना सेटअप बनाते हैं क्लाउड के लिए, सो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पैसे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, मशीनरी ख़रीदने के लिए। उस मशीनरी को चलाने के लिए यू वुड नीड मैन पावर। अगर नेटवर्क आपका बड़ा है तो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होगी। मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से पैसे रखने होंगे। मशीनों को कूल डाउन रखने के लिए यू विल नीड कूलिंग सिस्टम, उसके अलग से चार्जेस आपको पे करना होंगे। लाइसेंसिंग फीस ऑफ द सॉफ्टवेयर वो आपको अलग से ख़रीदने होंगे, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। एंड आल्सो इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और अपना सेटअप बनाने में आपका काफ़ी ठीक टाइम लगेगा आपका। सो एन अल्टरनेटिव इज़ टू गो फॉर द क्लाउड एंड अवेल द सर्विसेज। तो अगर आप क्लाउड की तरफ जाएंगे, वो सर्विस आपको उसी टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वो आप अवेल कर सकते हैं। सो दीज आर two advantages or reasons why we use cloud services. Okay, now हम cloud computing को formally define करते हैं, लेकिन उससे पहले let us see कि cloud को cloud क्यों कहते हैं।
क्लाउड का जो C है, it represent a common place. The L represent location independent. O is for online, U is for utility, and D is on demand availability. Common place C, common, is for anyone. If it is a public cloud, it is available, it should be available to all the people. Location independent, very simple. अगर कोई सर्विस क्लाउड पे अवेलेबल है तो आप इसको इंडिपेंडेंट ऑफ योर लोकेशन आप कहीं से भी उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो क्लाउड का जो ओ है ऑनलाइन मीन के यू मस्ट बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट in order to avail the service available at the cloud. Utility simply means कि किसी भी सर्विस को if it is not freely available यूज़ करने के लिए जो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया गया है दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी बेस्ड मॉडलिंग. यानी जिस तरह आप लोग घरों में यू पे फॉर द यूसेज, कितने यूनिट्स आप बिजली के खर्च करते हैं उतना ही आपके ऊपर बिल आएगा. कितने यूनिट्स आप गैस के जो है वो खर्च करते हैं उतना आपको पे करना होगा. सेम इज़ द केस विद द क्लाउड. जितना स्टोरेज आपको चाहिए यू नीड टू पे फॉर स्टोरेज पर जीबी के हिसाब से, या कितनी प्रोसेसिंग स्पीड आपको चाहिए यू नीड टू पे पर CPU per hour. So the more you use, the more you have to pay. The less you use the service, the less you have to pay. That is called utility model. And cloud का जो D है, it means कि on demand availability. आपको एक सर्विस चाहिए, आप अवेल करते हैं. जब आपको वो सर्विस नहीं चाहिए, आप उसको जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं. You don't need to pay for it anymore. So on demand access to the resources. In ही 5 characteristics को you will see in the proper definition of the cloud computing. So the first word is ubiquitous, which means everywhere. You can access it from anywhere. The second is convenient, on demand access to a shared pool. Shared pool का मतलब है कि जो resources आपको चाहिए वो आपके लिए dedicated नहीं होते. वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक आगे हम पढ़ेंगे. वर्चुअलाइजेशन के थ्रू उन रिसोर्सेस को शेयर किया जाता है अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स. रिसोर्सेस क्लाउड में कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हो सकती हैं. वो रिसोर्सेस स्टोरेज से रिलेटेड हो सकती हैं, वो रिसोर्सेस प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, वो सर्वर्स डेडिकेटेड सर्वर्स हो सकते हैं, collection of servers connected with one another in a form of a network, उनको भी हम रिसोर्स कह सकते हैं. कोई एप्लीकेशन आपको चाहिए उसको भी आप रिसोर्स कह सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक सर्विस आपको चाहिए उसको भी आप रिसोर्स कह सकते हैं. सो रिसोर्स कुड बी एनीथिंग. और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इट मस्ट बी रैपिडली प्रोविजनड, यानी आपको उस रिसोर्स को अवेल करने के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. उसी टाइम पे आप उस रिसोर्स को अवेल कर सकते हैं. एंड आल्सो विद मिनिमम मैनेजमेंट एफर्ट्स. नॉर्मली अगर आपको आप फिज़िकल वर्ल्ड में कोई रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में आपको एक सर्वर चाहिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंट अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होती है. While in case of the server that is not the case. You can rapidly provision the services with minimum management effort. So this is the basic definition of cloud and is provided by the NIST. Okay, अब हर एक टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो टाइम के साथ मैच्योर हुई है. सेम इज़ द केस विद द क्लाउड कंप्यूटिंग. स्टार्ट में हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे. यू नो व्हाट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर? Large in size, very expensive, dedicated persons, dedicated terminals where you submit your jobs and then get your results. उसके बाद PC का ज़माना आया. Small computer that you can place on the desktop. कीमत low in cost and other features. And then
the need of the time was to connect the different PCs, or in other words the clients with the servers with the help of network. So network computing का concept आया. And then internet, why not to access the servers from anywhere with the help of internet. इंटरनेट के बाद ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया. ग्रिड कंप्यूटिंग को ग्रिड कंप्यूटिंग इसीलिए कहते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रिड की तरह है. इस तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो व्हेन यू नीड एन इलेक्ट्रिसिटी यू प्लग इन दिस, फॉर एग्जांपल स्विच आप इसमें प्लग करते हैं, यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी. और जो ग्रिड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. इस पे आगे जाके हम बात मज़ीद भी करेंगे. एंड देन वी हैव द क्लाउड कंप्यूटिंग. और क्लाउड कंप्यूटिंग पे आके बात ख़त्म नहीं हो जाती. क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिस पे हम बात करेंगे. उन डिसएडवांटेजेस में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है लेटेंसी, डिले. कोई सर्विस अगर क्लाउड पे है उसको एक्सेस करने के लिए समटाइम्स द प्रोसेसिंग डिले और द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाउड, उसमें जो डिले है इसको हम राउंड ट्रिप टाइम भी कहते हैं, दैट इज़ ह्यूज. और जो रियल टाइम एप्लीकेशन है या टाइम क्रिटिकल या मिशन क्रिटिकल टाइप की एप्लीकेशंस हैं उस केस में डिले इज़ वेरी सेंसिटिव. तो उस केस में द यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ क्वेश्चनेबल. ओके, ये वही टेक्नोलॉजीज है जिस पे हमने बात की है अभी. क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स या डिप्लॉयमेंट मॉडल. जिस तरह हमने कहा कि क्लाउड आपके पास प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है. इन दोनों के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग आपके पास या क्लाउड का जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है. कम्युनिटी बेस्ड क्लाउड का जो मॉडल है, इन सिंपल वर्ड कि जो सर्विसेज क्लाउड में अवेलेबल है दैट इज़ ओनली फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. सिर्फ वो स्पेसिफिक ग्रुप उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ सर्विस विच इज़ डेडिकेटेड फॉर द यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता. या अ सर्विस विच इज़ डेडिकेटेड फॉर रिसर्चर्स ओनली, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता. या फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, एंड सो ऑन. हाइब्रिड कंप्यूटिंग as the name indicate, that is a collection of any 2 or 3 types of cloud computing, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं. फिर हमारे पास डिलीवरी मॉडल है. 3 मॉडल्स हैं जिस पे इस लेक्चर के एंड पे हम डिटेल से बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, द सेकंड वन इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड द थर्ड वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इनके अलावा और भी हमारे पास सर्विसेज मॉडल्स हैं. फॉर एग्जांपल डेटाबेस एज अ सर्विस है, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस है, सिक्योरिटी एज अ सर्विस है, स्टोरेज एज अ सर्विस है, टेस्टिंग एज अ सर्विस है, मैनेजमेंट एज अ सर्विस है, प्रोसेस एज अ सर्विस है, इंटीग्रेशन एज अ सर्विस है, ट्रस्ट एज अ सर्विस आप ले सकते हैं. इसके अलावा मोबिलिटी एज अ सर्विस आप ले सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस एज अ सर्विस आप ले सकते हैं, एंड सो ऑन. सो इन सिंपल वर्ड हम एक लेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्स एज अ सर्विस. और एक्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, विच मीन्स के इनिशियली क्लाउड के जो मॉडल्स थे वो 3 थे, एंड दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. लेकिन बाद में और टाइप ऑफ सर्विसेज इसमें ऐड होती रही, एंड नाउ वी हैव लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल जिनको आप क्लाउड पे जो है वो दे सकते हैं. एंड दीज आर सम ऑफ द प्रोवाइडर्स, एंड दिस इज़ असाइनमेंट 1 ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स. जिन्होंने सबमिट नहीं किया वो असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस के लिए आप जो वेबसाइट आपको प्रोवाइड की जाएगी कोर्स के हवाले से, उस पर आप इंस्ट्रक्शन सबमिशन के लिए देख सकते हैं. Lecture number 3 was about advantages, disadvantages of cloud computing, characteristics and some of the providers of cloud computing. Cloud computing का जो first advantage है according to NIST, there is cost reduction. अगर आप public cloud की बजाय अपना setup बनाते हैं
तो उसमें आपका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट अलग से होगा, जो इक्विपमेंट्स सर्वर्स, स्विचेस, रूटर्स, केबल्स, यूपीएस, पावर सप्लाईज एक्सेट्रा वो आपको परचेज़ करनी होगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं या जो वायर्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो डिवाइसेस हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और इस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए आपको जो स्टाफ चाहिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या टेक्नीशियंस, उनके कॉस्ट अलग से। सो अगर आप किसी एक सर्विस के लिए इतना कॉस्ट जो है वो एलोकेट करते हैं या खर्च करते हैं, एन अल्टरनेटिव इज़ टू यूज़ अ क्लाउड सर्विस जिसमें आपको बहुत ही कम पैसे जो हैं वो लगाने होंगे। इन अदर वर्ड वी कैन से कि यू नीड टू पे ओनली फॉर दैट सर्विस। आपको सर्वर के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, स्टाफ हायरिंग के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, वगैरह वगैरह। सेकंड एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज स्केलेबिलिटी। आज अगर आपको लेट सपोज क्लाउड पे एक सर्वर चाहिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी नीड जो है वो बढ़ जाती है और आपको अभी जो है वो सेकेंड सर्वर की ज़रूरत है। तो अगर आप क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, यू कैन ईजीली स्केल योर सिस्टम फ्रॉम 1 to 2 सर्वर्स, कोई इशू नहीं है। अवेलेबिलिटी, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, आप क्लाउड की सर्विसेज कहीं से भी किसी भी टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं विद ईज, विद कन्वीनियंस एंड विद लिटिल एफर्ट्स, एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। इसके अलावा जो एडवांटेज है वो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी क्लाउड की सर्विसेज में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर ओन सेटअप। और किसी बिजनेस के लिए आईटी रिसोर्सेज की रिलायबिलिटी दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रिलायबिलिटी की अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, सो दैट इज़ द रिकवरी टाइम आफ्टर द फेलियर। नॉर्मल सेटअप में अगर कोई सिस्टम फेल कर जाए तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमिंग टास्क। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में अव्वल तो जो है वो फेलियर आता नहीं है, क्योंकि दे क्लेम, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लेम कि उनके जो सिस्टम्स हैं वो 99.99% ऑफ द टाइम वो अवेलेबल होते हैं, वो रिलायबल होते हैं, में कोई मसला वगैरह नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल सेटअप में रिलायबिलिटी इज़ नॉट दैट मच। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डिफरेंट एक्सेस के मॉडल्स अवेलेबल हैं एंड सो ऑन। और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कस्टमाइजेशन के आपको कितने सर्वर चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कितना बैंडविड्थ चाहिए, कितनी स्पीड आपको चाहिए, कितनी मशीन्स आपको चाहिए, वगैरह वगैरह, यू कैन कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर ओन नीड। इसके अलावा मेंटेनेंस है। सो क्लाउड के केस में यू एक्चुअली मिनिमाइजिंग द कास्ट इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस। अगर आपका अपना सेटअप है तो देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि हर 3 साल बाद आपको अपना हार्डवेयर जो है वो अपग्रेड करना होता है। और मेंटेनेंस में ये भी आता है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आते हैं, लेटेस्ट उनकी अपडेट्स आती हैं, वो आपको करना होता है। इसके अलावा आपने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना होता है, उनकी स्पीड को, प्रोसेसिंग स्पीड को, मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, वगैरह वगैरह, जो टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, यू हैव टू अडॉप्ट yourself to those changes. क्लाउड के केस में you don't need to be worried about such things। कोई अपडेट हैं, कोई पैचेस सॉफ्टवेयर्स के हैं
या कोई सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग कोई इशू है या बैकअप लेना है, ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइडर आपके लिए आपके एंड पे कर रहे होते हैं. सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट सच थिंग्स. हाउएवर एवरीथिंग हैज़ अ डाउन साइड. ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ सिक्योरिटी. आप अपने डेटा को किसके हवाले कर रहे हैं, किसके सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं. और वर्चुअलाइजेशन की वजह से सिक्योरिटी और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज हैं दे आर शेयर्ड. वर्चुअली उनको शेयर किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स. तो एक ही हार्ड डिस्क को दो बंदे एक्सेस कर रहे होते हैं, एक ही सर्वर को दो बंदे एक्सेस कर रहे होते हैं, या दो से ज़्यादा बंदे एक्सेस कर रहे होते हैं. सो सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न. अनदर कंसर्न इज़ अबाउट लोकेशन ऑफ द डेटा. सम कंट्रीज़ उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि अगर आप क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, सो द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ क्लाउड जो कि उसी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहा हो. यानी आप अपने कंट्री के डेटा को अपने कंट्री से बाहर किसी के सर्वर पे स्टोर नहीं कर सकते. दैट इज़ द लिमिटेशन. सो लोकेशन ऑफ द डेटा इज़ अ कंसर्न. इसके अलावा मल्टी टेनेंसी ऑफ कस्टमर्स, इस पर हम बात करेंगे अभी कि मल्टी टेनेंसी किसे कहते हैं. इन शॉर्ट वर्ड्स कि जो रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है वो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उसको और भी यूज़र्स एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं. ट्रस्ट इज़ अनदर इशू. पहले जो है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वर द ओनली इश्यूज. नाउ सिर्फ सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज नहीं है. आजकल की कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स में ट्रस्ट इज़ अनदर फैक्टर, रेपुटेशन इज़ अनदर फैक्टर. इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द क्लाउड कंप्यूटिंग. कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो टॉप पे है, वो अमेज़ोन है. काफ़ी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं अमेज़ोन. और नॉर्मली जो क्लाउड सर्विसेज है उनको हम कहते हैं AWS, अमेज़ोन वेब सर्विसेज. एंड कहा जाता है कि दैट इज़ द लार्जेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. जो इनकी तो बेसिक सर्विसेज हैं, एक को हम कहते हैं EC2 जिसका जो फोकस है वो कंप्यूटिंग पे है, एंड S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस जिसका फोकस जो है वो स्टोरेज पे है. AWS आपको तीनों किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ड्रॉपबॉक्स का अगर आपने नाम सुना हो, फेमस सर्विस प्रोवाइडर है. इनका काम जो है वो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट. लिमिटेड स्टोरेज स्पेस ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करती है. अगर आपका ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट है तो आपको पता होगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है. अगर आप अपने फाइल को या अपने डेटा को ड्रॉप बॉक्स में रखते हैं तो आप उसको कहीं से भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं. ड्रॉप बॉक्स खुद अमेज़ोन की सर्विसेज S3 को यूज़ करता है एट इट बैकएंड. इसके अलावा गूगल एप्स हैं, बहुत सारे हैं. जीमेल, गूगल डॉक्स. इसके अलावा उसके जो है वो पिक्चर्स के लिए भी एप्स अवेलेबल है, डेवलपमेंट के लिए एप्स अवेलेबल है. इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं. फॉर एग्जांपल गूगल लैब्स हैं, गूगल क्लासरूम्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इस कोर्स के लिए. गूगल ड्राइव है स्टोरेज के लिए एंड सो ऑन. एंड वी आल्सो हैव माइक्रोसॉफ्ट Azure, and one of the famous product is Office 365 that is an online version of the famous Microsoft Office. अगर आपके सिस्टम पे Microsoft Office नहीं है, फॉर एग्जांपल आप Linux यूज़ कर रहे हैं या Mac यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑफिस अवेलेबल नहीं है या ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन ऑफिस 365 को यूज़ कर सकते हैं. एंड देन वी हैव HP क्लाउड्स एंड अदर cloud provider in the list. Okay, let us talk a bit about the four features which are present in today's cloud. They are massive in scale, on-demand access, data intensive, and new programming paradigm. First, what is massive scale? We are living in a data-driven society, or you can say data-intensive society.
अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें डिफरेंट कंपनीज की, you will get an idea how much data we are generating every second. Facebook, for example, according to GigaOM statistics in 2012, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए total number of servers at Facebook in 2009, they were 30,000. In 2010 it is double, that is 60,000, while in 2012 the total number of servers at the Facebook data center were 180,000. अगर आप आज की statistics देखें, so I'm sure there is going to be much more larger than these figures. अब सिर्फ Facebook नहीं है, on the other side you have the Microsoft, you have Yahoo, you have Amazon, you have eBay, you have Google, HP, YouTube, Twitter, and so on. So we are dealing with data centers that are massive in scale, and we are dealing with the data that is big in nature. अब इस massive scale को हम एक नाम देते हैं, that is called a data center. अब here we have a virtual walk through inside a data center के data center में actually होता क्या है. So we have servers जिनको हमने organize किया होता है in different racks. This is the front view of the servers of the systems or the racks, which is very beautiful. However, the back is very ugly. You will see lots and lots of wires connecting those PCs with one another and other networking devices. Inside a server is like a normal server, the motherboard, the chips, and other components installed on it. Some server they are kept in a very secure environment. For example, अगर financial से related कोई डेटा है सर्वर्स पे स्टोर है तो उनको फिजिकली भी सिक्योर रखा जाता है. ओके, डेटा सेंटर को चलाने के लिए यू नीड पावर, और वो पावर जो है वो किसी ट्रांसफार्मर का पावर नहीं होता, दैट इज द पावर ऑफ द होल ग्रिड. और कहा जाता है कि एक डेटा सेंटर को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ होल सिटी. वाओ. इसके अलावा कूलिंग, डेटा सेंटर्स को कूल रखने के लिए यू नीड कूलिंग सिस्टम्स. एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अ जर्नी इनसाइड अ डेटा सेंटर, हियर आर फ्यू लिंक्स जिसको आप जो है फिर विजिट. So the first characteristic of today cloud was massive in scale. The second is on demand access. On demand access mean ke when you required a service you avail that service, and when you do not require that service you release that service. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो रेंट ए कार है, या जिसको हम रेंट अ केब भी कहते हैं, कि आपको जब कार की ज़रूरत हो sorry, and you don't have your own car, so you rent a car and you pay for use. जब आपको ज़रूरत होती है आप रेंट करते हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं होती आप कार रेंट पे नहीं लेते. So there is an example of on demand access. अब डिफरेंट चीज़ों को आप ऑन डिमांड ले सकते हैं. जो सर्विस मॉडल्स हमने पढ़े थे, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, दोज आर द एग्जांपल्स. द थर्ड feature which is very interesting is data intensive computing. The trend has been changed. In the previous times the focus
was on computation intensive computing, while in today's world the focus is on data intensive computing. Actually, we are dealing with a large amount of data, especially our cell phones, our smartphones are generating a huge amount of data. The number of smart devices is more than the population of this world, and in the near future, uh, all the objects are going to be connected. All the appliances in our homes, offices, schools, colleges, hospitals are going to be connected. The whole cities are going to be connected with the internet, and all of this stuff is going to generate a huge amount of data. Now there are some issues: how to store this big amount of data, how to make sense out of this data, how to analyze this data, how to present this data, and so on. So we are dealing with a huge amount of data. The data is like different in volume, huge in volume, different in variety. Some data is generated from by the cell phone, some is generated by the human being, some is generated by machines, some is generated by other objects, and so on. So diverse variety of data we are dealing with. And the last feature of today's cloud is new programming paradigm. Well, जो हमारे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली बिग डेटा को डील करने के लिए दे आर नॉट इनफ, सो वी नीड अल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग टूल्स. उसमें क्लाउड में जो सबसे फेमस हैं बिग डेटा से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड हडूप. कमिंग लेक्चर्स में हम उस पर बात करेंगे. इसके अलावा जो है वो मैप रिड्यूस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे. इन अदर थिंग्स, जो हडूप का प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ लाइक, इसको हम हडूप इकोसिस्टम भी कहते हैं. उसमें हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. लेट मी शो यू what are the tools, new programming tools available for the cloud computing. Here we go, Hadoop ecosystem. You see, plenty of tools are available to work with cloud computing. Some of them are, maybe they are familiar, for example Storm, Spark, or Cassandra, Zookeeper, etc. So some of them, इसको हम एक्सप्लोर भी करेंगे हडूप में, हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा काम करेंगे. ओके, इसको हम जू भी कहते हैं. यू सी, हडूप को हडूप क्यों कहा जाता है? इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. उस पर भी हम बात करेंगे अपनी जगह पे व्हेन, जब हम हडूप को डिटेल से पढ़ेंगे. एंड दिस इज़ लाइक अ जू. यहाँ पे आपको पिग भी नज़र आ रहे हैं और भी एनिमल्स नज़र आ रहे हैं. सो इसको आगे जाके हम मज़ीद जो है वो फिर एक्सप्लोर करेंगे. So these were the 4 features of today's cloud. Okay, dear student, अभी तक हमने जो डिस्कशन की, it was basically an overview of what you have already studied inside the classes. From here onward, the material is new, so pay attention. ऑनलाइन लर्निंग का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप लेक्चर्स को किसी भी टाइम पे सुन सकते हैं, किसी भी मोड में आप इसको सुन सकते हैं. आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप कहीं पे वॉक कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, और जो भी है, वट एवर योर सिचुएशन इज़, आप इनको फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाउड सर्विसेज. बेसिकली हम बात करेंगे 3 different cloud services की, and they are, you know, the software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. So this lecture is to introduce you
to the different services that you can use, the different setups that you can use. We will also compare these three different types of services, and also what we are going to do is to use or is to get familiar with the major service providers, the cloud companies which provide these services. As an example, we will see some of the companies जो कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती हैं, जिनसे आप ये सर्विसेज ले सकते हैं. Okay, so here is a big picture. You can see a stack of different layers and different services. If you look at the diagram or the details provided in the diagram, what you see, it really matters. You see how infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service actually fit into this stack. So let us first talk about the packaged software. इसमें क्लाउड का यूज़ नहीं है. A simple example is कि आप अपने ही सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सो आपका कंट्रोल आपके सिस्टम पे फुली होता है. You have a full control over the application, over the data, over the runtime, the middleware, the operating system, virtualization if it is involved, the servers, the storage, and the networking if it is connected with the network. You manage, you control all these things if it is a packaged software. Okay. The next one is infrastructure as a service. In infrastructure as a service, what you manage decrease. What you are doing is getting, or what you are getting from the provider. ये जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में बिल्कुल बॉटम पे, दीज आर द थिंग्स जो कि आप मैनेज नहीं करते, जिनसे आपने क्लाउड की सर्विस अवेल की है, जो आपका प्रोवाइडर है, गूगल है, अमेज़ॉन है, HP है, जो भी है, ये मैनेजमेंट आपके लिए वो खुद करेंगे. What you manage in infrastructure as a service is application, data, runtime and middleware. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर जितनी चीज़ें हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं. The rest of the things they are managed by the vendor. If you move a step forward, यानी अगर आप platform as a service पे आए, then here it extends and you get control over the operating system. You have control over the middleware and the runtime environment. Sorry, you don't have control over the runtime environment, the middleware, the operating system and other stuff. यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में पिंक कलर जो आपको नज़र आ रहा है, दीज आर द कंपोनेंट्स जो कि आपके लिए प्रोवाइडर मैनेज करेगा. आपका कंट्रोल और भी कम हो गया. हेयर यू कैन कंट्रोल द एप्लीकेशंस मोस्टली जो आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और द डेटा इनसाइड दैट एप्लीकेशन, आपका अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल होता है और उस एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल होता है, एंड दैट्स इट. Okay, now come a step forward and take example of the software as a service. So if you go to the software as a service, then here all the components that are managed for you by the vendor, by the provider.
यहाँ पे आपको कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती. इवन द एप्लीकेशन इज़ मैनेज बाय द प्रोवाइडर. अगर आप हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आप एप्लीकेशन का लुक एंड फील चेंज कर सके, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द प्रोवाइडर. सो दिस डायग्राम, इसको अगर आप कंक्लूड करें, it show you how much control or involvement you get, or what you can do with different type of services. Let me summarize. If it is a package software, आपका अपने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर है, आप फुली उसको कंट्रोल कर सकते हैं. If it is infrastructure, then like 50-50. In a platform as a service, you control a few components, application and data. Rest of the things are managed by the vendor or by the provider. While in software as a service, you almost have no control. Even application के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं होता. So, associated with each of these models is flexibility. That is what you can actually do or what you actually cannot do with a specific type of service model. So infrastructure as a service, a lot of on the demand. For example, Amazon EC2, VMware, vCloud, they can provide you the services of infrastructure. इसमें computation, processing and storage, they are the main resources, and the providers are Amazon, EC2, VMware, vCloud, or भी हैं, but these are some of the example. Platform as a service, there you have on-demand application hosting. Okay, यहाँ पे आपका कंट्रोल कंपैरेटिवली, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करें तो आपका कंट्रोल कम होता है. Here you have got the Google App Engine for application development. Salesforce.com is a key system, but they also allow you their platform which you can use as a service. Microsoft Azure है, Amazon है, all offer the same type of services to you in platform as a service. And then software as a service, यहाँ पे जो examples हैं वो they are very common, हम डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अगर है, या जीमेल है, या गूगल डॉक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स वगैरह. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अ सर्विस. अगर हम इन तीनों को एक लाइन में डिफाइन करें, सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज़ फॉर एंड यूज़र, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज़ फॉर डेवलपर्स, while infrastructure as a service is for the administrator, जहाँ पे वो virtual servers और networking के concepts आते हैं. So there is much more complex task of the administrators, so they deal with this. Okay, now let us talk more about platform as a service. So moving to the platform as a service, first thing is that it's a cloud computing environment, and it allows the user to run applications on the cloud. However, it's above the infrastructure. It is in the middle. Platform से ऊपर आपके पास applications हैं, platform से नीचे आपके पास infrastructure है. तो अगर आप developer हैं और आपको डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए कोई टूल चाहिए जो कि आपके सिस्टम पे नहीं है और आप उसको क्लाउड पे एक्सेस करने जा रहे हैं, सो द सोल्यूशन इज़ टू गो फॉर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. देयर इज़ लाइक अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द टू लेयर्स.
and a development platform for the developer. इसमें platform as a service में doesn't require the users, the customer to develop their own operating system environment. Okay, so यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यू डोंट नीड टू बी वरीड, आपको प्रोवाइड किया जाएगा. आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, and then you select the tools and you start developing. It offers an application development platform जहाँ पे आप different types के application जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, develop कर सकते हैं. And the beauty is that you can scale if your demand changes with time. So scalability, जिस तरह आपको पता है कि there is one of the advantage of cloud computing. So if it come to the cloud and you require the scalability, you can do it very simply with the platform as a service. Okay, this is very important table जो आप देख रहे हैं. It shows a comparison of all the three services and also the standalone servers, यानी जो आपका है, जो आपको टिक नज़र आ रहा है. These are the entities जिनको आप खुद मैनेज करते हैं. So the cloud is all about saving the cost and time. In other words, we can say that the cloud is about to provide cheap services to the user. In cloud, what you are doing is actually renting the computer or other resources, for example operating system, virtual server, storage, etc. So basically you are providing a sort of environment that you are going to build for your user, and there is a sort of inexpensive solution. So you are benefiting from the cloud. अगर हम स्टैंड अलोन की बात करें, यहाँ पे चूँकि क्लाउड है ही नहीं, सो नथिंग इज़ मैनेज फॉर यू बाय द प्रोवाइडर. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें, सो ऑपरेटिंग सिस्टम तक जो है वो आप खुद मैनेज करते हैं, जबकि बाकी जो वर्चुअलाइजेशन और उससे नीचे की जो एंटिटीज़ हैं वो आपके लिए प्रोवाइडर या वेंडर मैनेज करता है. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यू ओनली मैनेज द एप्लीकेशन, rest of the things are managed by the provider. And software as a service, यहाँ पे आप कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे. सो लास्ट जो स्टेक आप लोगों ने देखा था और ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं, दे डिपिक्ट द सेम थिंग्स. दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है. वहाँ पे उसको एज अ स्टेक प्रेजेंट किया गया था, यहाँ पे हम उसको एज अ टेबल के फॉर्म में हम उसको देख रहे हैं. ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की डेफिनेशन है NIST की तरफ से. दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन गो थ्रू इट द डेफिनेशन के व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. व्हाट यू सी इज़ गूगल जो है ना, वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. गूगल कैन एक्चुअली प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एज वेल. However, the focus of the Google is on the platform, and one of the example is Google App Engine, which is an example of the platform as a service. अगर आप Amazon की example ले लें, Amazon provides a range of facilities and it is not actually specialized in providing a platform as a service. इसका main जो focus है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, लेकिन स्टिल आप इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. गूगल ऐप इंजन्स पे हम बात करेंगे आगे भी. यू कैन यूज़ मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर डेवलपमेंट अगर आप गूगल ऐप इंजन को यूज़ कर रहे हैं. यू कैन यूज़ डिफरेंट डेटाबेसेस अगर आप गूगल ऐप इंजन को यूज़ कर रहे हैं. You will get all sort of supports in order to use these applications for your own use. Microsoft Azure is another example of platform as a service.
Actually, it provides platform as a service as well as infrastructure as a service, और ये इसका जो फोकस है वो कंप्यूटिंग और स्टोरेज पे है, एंड आल्सो एप्लीकेशंस पे भी इन्होंने काम किया है. Mostly it is related with the .NET technologies and other systems, so they are a very sophisticated platform for development. Well, platform as a service can be better for cost than infrastructure as a service. यानी अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से कम होगी. These systems are optimized to run different types of applications efficiently, and you could actually benefiting from the actual servers. You can run different types of applications on the cloud. It also gives you better optimization, but if you want something very special और आपकी need जो है वो platform as a service fulfill नहीं कर रहा, उस केस में you have to switch to the infrastructure as a service where you have to pay more, लेकिन वहाँ पे आपकी जो services है वो भी ज़्यादा होगी. Multi-tenancy पे हमने बात की थी कि mean के many users can share the same physical computer or the same databases, और यूज़र को ये फीलिंग होती है कि पूरा का पूरा जो क्लाउड है वो उसी के लिए डेडिकेटेड है. नो, या पूरा का पूरा जो सिस्टम है या जो हार्डवेयर है वो उसी के लिए है. नो, इट इज़ एक्चुअली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स. दैट इज़ कॉल्ड मल्टी टेनेंसी. Actually, one of the benefit of the platform as a service is that the vendor of the services, the actual service providers, can employ multi-tenancy on the platform as a service. So they can optimize their infrastructure by allowing many people, customer of the platform as a service, to be using in the system. So this can give you a very low cost in how things are being operated. Let me summarize. Multi-tenancy का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर द प्रोवाइडर कि वो एक ही रिसोर्स को जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को दे सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स को चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन पर आवर और बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग स्पीड. सो एक रिसोर्स को वर्चुअलाइज किया जाता है अमॉन्ग मल्टीपल यूज़र्स. ओके, here is a concept which is called vendor lock-in. What does it mean? Let me tell you कि lots of the people they get worried about vendor lock-in. अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि आप जो है उनके साथ लॉक्ड इन हो जाते हैं. What does it mean? It means कि the users who are going to develop the application, they must have to use the proprietary interfaces and the languages and the tools provided by the vendor. For example, Google है. अगर आपने Google को एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ करना है तो जो जो टूल्स वो आपको प्रोवाइड कर रहा है उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपने एप्लीकेशन बनाते हैं. अब फ्यूचर में अगर आप गूगल की सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इजीली अपने सोल्यूशन को गूगल से फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे माइग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के टूल्स डिफरेंट हैं, दोनों के एनवायरनमेंट डिफरेंट है, दोनों की लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं एंड सो ऑन. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड इसको हम कहते हैं वेंडर लॉक्ड इन, कि आपको अब फॉर एवर जो है वो गूगल की सर्विसेज ही यूज़ करनी होगी क्योंकि आप उनके साथ लॉक्ड इन हो गए हैं अगर आप प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो. And also the development tools, many platform as a service provider they offer you browser based development tools. ठीक है, आप क्रोम को यूज़ कर रहे हैं, उनके जो फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट टूल्स है वो क्रोम के साथ जो है वो compatible है. In this way the developers can create their own applications online. On the plus side, this is like an ease of deployment. You can get things up and running very fast. आपको कोई सर्विस चाहिए, आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्लाउड पे जाएं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे जाएं,
उन टूल्स को जो है वो यूज़ करें और फास्ट डेवलपमेंट करें। ठीक है जी। सो डेवलपमेंट टूल्स जो अवेलेबल है उनसे आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, दे टिपिकली प्रोवाइड यू प्रिमिटिव्स टू टेक केयर ऑफ द स्केलिंग। जिस तरह स्केलिंग पे हमने पहले भी बात की, सो दैट इज़ मच मोर easier टू स्केल योर solution if you are using platform as a service. On software development side, as a developer, your objective is to create an application in the quickest and most effective way possible. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपकी कोशिश होगी कि आप एप्लीकेशन को क्विकली, फिजिबली और इफेक्टिव वे में डेवलप कर सकें। You would not want to create or develop applications that use the convoluted methods, the traditional methods, जो के which take a long time and they take long time to complete, and the users only see the end product, not the development process. तो अगर आप प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो डेवलपमेंट है वो क्विकली होगी, फास्ट होगी, एफिशिएंटली होगी, एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन द होल डेवलपमेंट process as well. So the last question is कि आपको platform as a service चाहिए या infrastructure as a service, or you will select platform as a service or infrastructure as a service. When you use the cloud, remember this is very important to make your decision कि आप platform as a service पे जाएंगे या infrastructure as a service पे जाएंगे, because this decision have long term consequences on your business. So you need to think about it कि आप कौन से ऑप्शन पे जाना है based on your need and based on your future plan. If you choose to use platform as a service and get your application vendor locked in, this is just an example कि अगर आपने platform as a service पे जाना है और वहाँ पे आपको जो है वो vendor locked in का problem आ गया, then उसका नुकसान क्या होगा? Your business may fail if the platform as a service greatly increase their prices. Let's suppose आप गूगल की platform as a service को यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में उनके प्राइसेस इंक्रीज़ कर गए और आप जो है माइग्रेट होना चाह रहे हैं अमेज़ोन पे, बट यू आर लॉक्ड इन टू देयर टूल्स, टू देयर एप्लीकेशंस, टू एवरीथिंग दैट प्रोवाइडेड बाय द गूगल टू यू। आप जो है माइग्रेशन करना वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, या फॉर एग्जांपल प्राइसेस के अलावा अगर उनकी सर्विसेज इनएडिक्वेट हैं, वो आपकी नीड पूरी नहीं कर रही, आप स्विच करना चाह रहे हैं, सो दैट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। सो यू मस्ट थिंक कि अगर आप कोई टेम्प्रेरी सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे आपने जाना है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज़ अ गुड सोल्यूशन। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर माई बेस्ट, लेकिन कमियाँ होंगी इसमें, और inshallah with the passage of time we will try to sort out things and to make it more efficient and if possible interactive as well. So that's it for today lecture. Inshallah see you in the next lecture. Next lecture में हम इन्हीं तीनों services को मज़ीद elaborate करेंगे, platform as a service, infrastructure as a service and software as a service. See you then. Take care of yourself. Allah Hafiz.